अरे Or भाई as the Germans do. now it's good. Okay. So hello, welcome to the red side, and this is a fan camera. Generally, my fan cams में we do it individually, but for this one we had to do a tag team. And this one deserves a tag team. So I'll Like you know that meme from that NBA player, right? yeah, Okay, the first time was nice. We had to do it twice. So this is exactly. it was the first so nice. We had to do it 7 times. वन हैक टू हैक थ्री हैक फोर हैक फाइव हैक सिक्स हैक सेवन हैक तुम लोगों को तीन और मारने थे बस तो 10 हैक पूरा हो जाता रॉबर्टसन को 2 chances मिले थे, कोनाटे को 1 chance मिला था. We could have had that 10 hands. God. मतलब उस गेम को देख के कोई बोल भी नहीं सकता कि लिवरपूल वर नॉट इवन इन द गेम फॉर द फर्स्ट 40 मिनट्स Or like और we were just not good at third half, at the या final third. मतलब वी वर इन द गेम, ऐसा नहीं है. लाइक वी वर क्रिएटिंग चांसेस, यस, बट जो फाइनल थर्ड में जो आना चाहिए था वो चीज नहीं आ रहा था. ओह एंड आई मीन द वे, लाइक, एंड we have to talk about how crisp that pass was from Robertson ओह for the first एब्सोल्युटली goal. मतलब Fred को गिराना, that like that's poetic, you know. Like when so there are certain players I just want them to fall down. Bruno Fernandes is at the top of the list. And the guy's crybaby. That's I mean, कितना रोता है भाई वो. I mean, and Anthony is just the close second. अरे एक्चुअली फ्रेड क्या है फ्रे, फ्रेड का क्या है, वे- वो रोता है, वो रोता नहीं, वो गुस्सा दिखाता है, और फिर उसके सामने आ जाता है कोनाटे. हाँ, क्या तो कर लेगा वो वो कुछ कर नहीं सकता गुस्सा दिखा के. वो कोनाटे इतना लंबा है उसके आगे. वो करेगा क्या. हम लोग गेम के बारे में डिस्कस करें उससे पहले डिस्कस करना बहुत जरूरी है अबाउट दैट टाइटल चार्ज ये टाइटल चार्ज ये है I think it will dent United's hopes. I think, आई matlab, because that's a 7 goal difference now, and they lost a game. So that's 3 point difference and 7 goal difference. have you ever known a team that is in the title race losing 7-0 7-0 a team in the title race It it it, losing it it doesn't 7-0 happen with United. Like Liverpool, like this is the Liverpool's biggest win over United. yeah This is United's biggest biggest loss against, loss I think, in the whole of Premier League, not yeah only against Liverpool but in the whole of Premier League. yeah it's the biggest loss ever And Salah became the record goal scorer for Liverpool in the Premier League. He just overtook Robbie Fowler. So I think that's 3 records that are there. And I have to admit, I just want to have a crying Bruno Fernandes as my wallpaper now. अरे लास्ट दो गेम्स पे एनफील्ड पे लास्ट दो गेम्स मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल द स्कोर्स हम्म. एग्रीगेट आर 11-0 4-0 last year 7-0 this year If you combine that with those scores from the last 2 seasons, this season and the earlier season, that's 9-0 last season, and that's 15-0 8 2. I mean, we scored 1 goal against them at Old Trafford, no, and they yeah scored 2 against us. So that's 3 wins and one win for them, and that's last का कितना हुआ, 7-2, 8-2 और 9, 15 तो 9 and 17, 17-2. 17 my god and these United fans were so disrespectful towards Anfield. Like I know as an Arsenal fan that whenever we visit Anfield, we would be lucky to get a draw, and if we get a draw, that's a good result. Get a draw, get a point, and get out of Anfield. Uh, then these Every United team is fans were Real so. Madrid. Not every team is Real Madrid, and we don't let anyone else be Real Madrid. सिर्फ एक बात बोलूं I want to see 9 months from now how many of those Liverpool players have become new fathers. I want to see that. I want to see how many of them have had kids after tonight. That is I'm sure Gakpo will have. I'm sure Gakpo will have. And I want to see how many David De Gea delivers.
Uh, So like if I like if I'll start, we did not like we were pressing from the start. ऐसा yeah. नहीं है कि हम लोग नहीं कर रहे थे, प्रेस अच्छा कर रहे थे, रन्स अच्छे बना रहे थे, बट जो फाइनल थर्ड में जो क्लिनिकल फिनिशिंग आती है वो चीज़ नहीं आ रही थी. एंड टू बी फेयर गैप्पो वाजंट एट हिज बेस्ट स्टार्टिंग. मतलब उसके पासेस थोड़े से वेवर्ड हो रहे थे और इंटरसेप्ट हो रहे थे, एंड विच वाज मेकिंग द अदर टीम मोर कॉन्फिडेंट. स्टार्टिंग के 25 मिनट वी वर वेरी डोमिनेंट. वी आर वेरी, मतलब आई कैन नॉट स्ट्रेस दैट एनफ कि कितने डोमिनेंट थे हम लोग. बट वो 25 मिनट के बाद जो वो जूस निकल जाता ना एकदम से, वो चीज हो गया. और देन दे स्टार्टेड अटैकिंग. आई मीन, आई हैव टू प्रेज ल्यूक शॉ फॉर व्हाट अ फकिंग पास दैट वाज फॉर रैशफोर्ड. आई मीन रैशफोर्ड एट द फॉर्म ही इज इन राइट नाउ, भाई श्योर शॉट विनर होना चाहिए था. वो चीज इतना प्यारा पास दिया था ल्यूक शॉ ने. वो नहीं, कई बार दिन भी नहीं होता, बट आई मीन मैंने नहीं बोलना चाहता, वी प्लेड वेल. मैं कहीं से ये नहीं बोलूंगा कि दिन नहीं था उसका, ये सब नहीं था. You guys still got chances. I mean, Manchester United still got chances, many chances. नहीं But यार पता है, इतना अच्छा लगता है जब स्टेफान बाइजेटिच जो 80 मिनट्स के बाद आ रहा है और वो ब्रूनो फर्नांडिस को और फ्रस्ट्रेट कर दे. मतलब भाई वो हाँ मतलब और ब्रूनो फर्नांडिस कोनाटे के पीछे भाग रहा है. ही ट्रिप्ड कोनाटे, ठीक है. उस ट्रिपिंग के चक्कर में हल्का सा उसके शायद उंगलियां उसके चेहरे पे इधर उधर लग गई होगी. The guy just like sat down रोते हुए कि भाई कुछ नहीं हो रहा. It was so good of seeing Andy Matley, the referee not to like stop the game. भाई अच्छा लगता है जब इस तरह की घटिया चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता. एक ये बात तो है कि मतलब the reason why United scored, like the reason why Liverpool scored 7 is also that United players checked out at 2-0. 2-0 पे उनका ऐसा हो गया था, हाँ. 2-0 3-0 पे उनका ऐसा हो गया था कि ओके अब गया गेम, तो स्टैच्यूज ही बन गए थे सारे. नहीं, They were. जनरली हो नहीं रहा ना उनसे उनसे ये वाले सीजन पे. मतलब दे आर नॉट पुट अंडर प्रेशर. आई मीन दे आर Yeah. प्लेइंग वेरी वेल दिस सीजन, तो प्रेशर आ ही नहीं रहा ना उनके ऊपर. प्लस आई थिंक पता है, अगर प्लेयर बाय प्लेयर की अगर हम बात करें ना, मार्टिनेज के साथ जो चीज हुई ना, जो साला ने किया, उसके बाद से मार्टिनेज नहीं था गेम के अंदर. उसके बाद से मतलब कोई भी नहीं होगा यार ऑनेस्टली. मतलब इट्स स्किन नॉट किया अबाउट उसको. बिकॉज साला हैज नॉट बीन द बेस्ट दिस सीजन एज वेल. 20 गोल फिर भी है उसके, बट ये जो गेम में लाया ना, दैट इज द साला वी नो. जो लास्ट सीजन जो उसने मैन सिटी और वॉटफोर्ड के साथ जो किया था उसने, सेम चीज इस साल किया उसने. प्लेयर गिराएगा वो, और वो ही अच्छा लगता है उसके ऊपर, अगर प्लेयर गिरा रहा हो. उसने एक शोल्डर ऐसा ड्रॉप किया था उस मार्टिनेज डुएल में कि वाह. मार्टिनेज दूसरी तरफ देख रहा था और बॉल पीछे था, साला पीछे था. मैं यार मतलब. बट सो I just want like what I do with this fan cams is I'll start with the team selection and then I'll go to Yeah, the like goal per go goal. ahead. ठीक है. Yeah. I was a bit, a bit unsure about the midfield Yeah. because we were not playing Bajcetic. ठीक है. How happy I've been by proved wrong. Henderson had such a good game. I mean, I'll start with Allison. Allison had a really good game. लेकिन थोड़ा सा इफी था पासेस के अंदर. बट आई थिंक पता नहीं, मतलब बारिश हुई थी हाफ टाइम के बाद, प्लेयर्स वर स्लिपिंग. तो वो चीज शायद से थोड़ा सा मतलब आपके दिमाग में आ जाती है. बट आई मीन थोड़ा सा इफी था पासेस में. बट ऑल इन ऑल अ डिसेंट गेम. Trent Arnold, I mean, if people like to say or love to say that Trent Arnold cannot defend, and let's see him against Rashford. Just watch that game. Trent Arnold defended well. ब्रूनो फर्नांडिस के साथ जो उसका हेड ऑन टैकल जो था उसका, दिखा था कि भाई ठीक है, द गाय नोज वेयर ही इज. और कहने की बात है, गर्नाचो के साथ उसने अच्छा किया था. आई मीन द वे ही लाइक पुश गर्नाचो एंड ऑल दैट, आई मीन इट शुडंट हैव बीन अ फाउल एज वेल, बट फिर भी आपका, I mean, Konate beast. Van Dijk, great game. I cannot stress that. No, Van Dijk had such a good game. Robertson तो like आज तो मैं आज मतलब मैं बोल ही नहीं सकता रॉबर्टसन कितना अच्छा खेला है आज. Like from the first assist, मतलब रेगुलर दैट फोरे डाउन द लेफ्ट विंग इतना प्यारा था. This you cannot say that Robertson was playing as a left back today. He was playing as a left wing back, Yeah. proper Yeah. left wing back. और And या मैं सिर्फ for a तुम्हारे cheap, डिफेंस पे एक कमेंट करूंगा
तुम्हारा डिफेंस परफॉर्म्ड way better than I imagined your defense to be skinned, पर इबू कोनाटे की वजह से he provided such a great solidity in that back line that तुम्हारा defense looked amazing. और वो लोग जो बोल रहे थे ना कि पेनल्टी है, वो ब्रूनो फर्नांडिस रो रहा था कि पेनल्टी नहीं है। भाई बंदा अगर पीछे हाथ है तो उसको नहीं दिखेगा। ठीक है। तुम मतलब आई थिंक अगर रोनाल्डो ये वाले मैच में खेलता तो गारंटी रेड कार्ड लेके जाता विद द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही डिड लास्ट टाइम, जो उसने कर्टिस जोन्स को मारा था ना लास्ट टाइम। सेम चीज अगर इस मैच को, कि इस बार 7-0 से हारे हैं लोग, उस टाइम 5-0 से हारे थे। I don't उसके know बाद how मतलब Bruno did not get a red card for shoving the assistant referee. हाँ, ये एग्जैक्टली एग्जैक्टली। उसने धक्का दे दिया आपने यार रेफरी को, क्या करे। और उसके अलावा आई थिंक देयर वाज दिस वन जहां साला को पुल बैक किया गया था। आई एम हाँ फॉरगेटिंग, आई थिंक मार्टिनेज था कि लूक शॉ था। लूक शॉ हाँ वाज फकिंग फ्रस्ट्रेटेड यार टुडे। लूक शॉ भाई, कोई भी होगा यार, अगर आपके इतना अगर कोई हिला देगा ना, आई थिंक दे मिस द ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग वैन बिसाका। मैं आज एग्जैक्टली। बोल रहा था ये वाली बात या कि यू कैन नॉट हैव लाइक वैन बिस लाइक इफ यू आर हैविंग डिएगो डालोट जस्ट बिकॉज ही कैन पास और ही कैन गो अहेड। डार्विन नूनेज आ रहा है सामने उसके, आप नहीं कर सकते ये चीज। कोडी गैक्पो सच लाइक मिडफील्ड के अंदर इट वाज सो गुड टू सी फabinho being the person, being the player that he is। या जो द इतनी बातें जनरल। उठ रही थी ना, सेल्फ फabinho यू कैन नॉट सेल्फ फabinho। आज के टाइम में अच्छे मिडफील्डर्स नहीं है हमारे पास। और आप उनमें से जो अच्छे, ठीक है सबका, कई अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स है जो हाफ ऑफ सीजन, पूरे पूरे सीजन के लिए चल जाते हैं। एटलीस्ट वो बंदा था, इंजर्ड तो नहीं था। एंड नाउ दैट ही इज शोइंग हिज क्वालिटी अगेन। हेंडरसन प्लेड सच अ गुड गेम टुडे, प्रेसिंग अच्छी थी उसकी। हार्वी एलियट क्या पासेस आ रहे थे उस बंदे के, एक रेगुलर प्रेशर डाल रहा था। मजा आ गया मतलब। and साला, मतलब साला अगेंस्ट यूनाइटेड इज लाइक इट्स अ डिफरेंट ग्रेवी। He's a different beast. He's a different beast. पता नहीं, मतलब I think he's a proper scout now. जिस तरह से वो खेलता है, बाप रे, it was uh, हार्विन नूनेज सच अ गुड गेम यार। अब कैसे मतलब तीन, आप ये बोलो तीन छोड़ो, हमारे 5 फॉरवर्ड्स खेले आज, 5 में से 4 के गोल हैं। जोटा का आते आते रह गया। इट वुड हैव बीन पोएटिक हैड इट बीन 8-0। and the guy came on in the 85th minute. So एग्जैक्टली। तो आई मीन टीम सिलेक्शन वाज ऑन पॉइंट, एंड नॉट ओनली द टीम सिलेक्शन, जो सब्स्टिट्यूट्स भी किए ना, इतने टाइमली सब्स्टिट्यूशंस थे और इतने अच्छे सब्स्टिट्यूशंस थे कि आई थिंक लाइक आई कैन नॉट से कि यार ये चीज और बेटर हो सकती, क्योंकि कुछ मेरे ख्याल से बेटर नहीं हो सकता है इसके अंदर यार। आप यूनाइटेड को हरा रहे हो 7-0, फ्लाइंग यूनाइटेड, अ टेन हैग यूनाइटेड, अ मार्कस राशफोर्ड हैविंग यूनाइटेड। ठीक है। डेहिया को बुत बना दिया मार्टिनेज के साथ जो किया कोडी गैक्पो ने फर्स्ट गोल के अंदर। मतलब ही यूज द मोमेंटम ऑफ मार्टिनेज टू परफेक्शन। और मैं सेकंड हाफ से तो मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते आप। हाँ आई हाँ थिंक मेरे ख्याल से उनकी टीम टॉक यही हुई थी, हार जाओ 1000 रुपये मिलेंगे। भाई, इतना मारा है, इतना मारा है, इतना मारा। वो राजपाल यादव वाली क्लिप नहीं है वो, उसमें चुप चुप के मारो मारो। मारो, मुझे मारो। मार मार के बॉबी बॉबी का गोल देखा था देखा। भाई, इतना मतलब वो इतने से स्पेसेस से जा रहे हैं गोल। क्या यार, वो एक्सक्विजिट गोल था, मतलब नटमेग था वो डेविड डे। हाँ, दैट लाइक वाज, इट वाज अ बॉबी फिर्मिनो गोल। या एंड आई मीन let's talk about David De Gea, the best stopper in the world, letting go 7 goals. आई मीन he stopped having, like he stopped thinking at least, so he stopped thoughts to come in his mind. But I think it was a tactical masterclass as well from Klopp. Klopp Yeah, you realized had a that, you had a thought, right? yeah. My thought was that, so in the first half, if you see, Liverpool were trying to do what they usually do.
and Uh, Man United were sitting a little bit deeper. They were a little deeper. उनकी line थोड़ी deep थी, and that is why they uh, were having some good chances on the counter because there were spaces in behind uh, of your defenders. जैसे ही you scored the first goal and you came in the halftime, when you came out after the halftime, I saw that your line was much deeper. तुम्हारी लाइन वो कुछ 20-30 यार्ड से डीप चली गई, और क्योंकि तुम्हारी लाइन डीप थी, उन्हें खेलने के लिए और आगे आना पड़ा, और जब वो लोग आगे आए, creating spaces in between. Yeah. एग्जैक्टली यू प्लेड देयर गेम better than they have ever done this season. You showed them Yeah, that but if you want to play counter attacking football, this is how you do it. You score seven past your opponents. Like, amazing. and they are not just normal opponents. Yeah. It's a fucking derby for that matter. और मतलब भाई आज मैं रोया हूँ। चौथा गोल, पांचवा गोल, छठा गोल, तीनों गोल पे रोया हूँ मैं। सातवें में मैं हंस रहा हूँ। और मतलब वो लाइक देयर इज दिस मतलब maniacal हंसी जो होती है कि भाई आपको मतलब यू जस्ट लाफिंग ऑल टुगेदर कि भाई हो क्या रहा है। It is hitting नॉट like मी, crack. This 7-0 is hitting नॉट like मी, crack. नॉट क्लॉप, नॉट एनीवन आउट देयर। The best astrologers couldn't have predicted this. Yeah. Yeah. No one It could was have such predicted. a good, it was such a good game. It was, and I have to read what United Trey says because I think he's the United guy when it comes to. They, yeah. तो वो पढ़, तब तक एक कमेंट सिर्फ करूंगा. They have so much chest, but they have nothing to back it. Like, the all of these United fans, they have so much chest, but nothing to back it. हम लोग तू यूनाइटेड ट्रे का पढ़, उसके बाद आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट टेन हाग Guy, स्ट्रेटजी. हाँ बोल. the guy has the ball to say he has the balls to say hit us for seven just to be seven, still be 7 points behind us. He fucking thrashed our title hopes. Just before it, he's saying, nah, 7-0 is insane. No point crying and no Ten Hag will make the players suffer for this. We'll have to settle for the treble now. Now, when I was thinking about 007 this weekend, I didn't even think it was possible for it to backfire. सिर्फ We don't deserve this pain, man. You fucking deserve it, okay? you absolutely deserve it. United fan, if it is anyone, it is especially United Trey that deserves this shot of shit. But uh, at And you know what the best quote was? I understand losing, but why do these guys smash us all the time now? I'm fucking tired. They're killing us with too many games. This was bound to happen. We played 68 games for fuck's sake last season, okay? the violins are out. The violins are out. But एक बात बताऊं, at 5-0, I thought the referee made a huge mistake. Which one? Like, At 5-0, he should have given a standing count to entire Man United team. Okay, one, two. But these guys have families. ये इनको घर जाना है यार. इनको रिश्तेदारों में मुंह दिखाना है, इनको शादियों में जाना है. क्या मुंह लेके जाएंगे अब? इनकी बीवियां इन्हें सोफा पे सुलाएंगी यार. मतलब ये ऐसा मुंह काला करा के आए हैं. गधे पे बिठा के मुंह काला करवाया है तुम लोगों ने. मतलब yeah, team. पता है, Ten Hag, he rarely messes with the team selection, but not playing Van Bissaka in play and playing Dalot in place of him, that was one of the biggest mistakes I've seen him to do. Yeah, And you know what? I don't even understand the point of Wout Weghorst. yeah. ठीक है, तो इतना उसको पीछे खिला रहे, ही इज नॉट फकिंग बॉबी। ये बॉबी फिर भी ना थोड़ी है यार तुम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? और पता है बेटर क्या हो सकता था? दे कुड हैव प्लेड ब्रूनो फर्नांडिस अहेड, या दे कुड हैव प्लेड सबित्सर, कासेमिरो एंड फ्रेड। साबित लाइक सर, हाँ. Yeah. ठीक है, फ्रेड को थोड़ा आगे खिला सकते थे एज अ नंबर 10, और ब्रूनो प्लेज लाइक सैंचो को खिला सकते थे वो लोग। बिकॉज लेटली यही हो रहा था कि ब्रूनो थोड़ा वाइड जा रहा था और सैंचो बीच में आ रहा था।
I don't understand Ten Hag's obsession with Anthony. मतलब he is non-existent in most games. He is there to rattle opponents. I mean, बट वही वाली बात है ना, सामने रॉबर्टसन आता है तो उसको रैटल नहीं कर सकते, आप रैटल हो जाओगे। He's like a Brazilian Andy Townsend. मतलब like is nothing. There's no, not Townsend. थाउजेंड नहीं, एंडी Andros कैरल। Townsend. Andy अच्छा, Townsend. एंड्रोस होगा। Andros Townsend. Yeah. अच्छा। I mean, I just want to, like, I just want to look in the eyes of every United fan who said Darwin Nunez is a shit Andy Carroll. Yeah. No, The no, no, guy no. scored two past your goalkeeper, two headers, और जो हार्वी एलियट वाला जो था उसमें पेस थी, उसको उस पास में पेस थी। तो रियली नीड टू बी टू, लाइक आपको फास्ट होना पड़ता है, आपको एंटिसिपेट करना पड़ता है वो चीज। गैक्पो हैड सच अ गुड गेम, गैक्पो हैड, आई मीन, उस बंदे का फर्स्ट गोल, लाइक इट वाज एज द इटालियन से। और साला राइट फुट से मार रहा है यार आज, एंड द गाय रेयरली यूजेस हिज राइट फुट, हाँ. ही ब्लास्ट द रूफ आउट ऑफ द गोल। और वो सिर्फ जो पहला गोल था उसका, गाक्पो का, उसके लिए व्हाट द हेल इज वरान डूइंग? उसका रीडिंग इतना घटिया है उस गोल के लिए। वो भाई जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, मतलब ऑब्वियसली गाक्पो इज गोइंग टू कट इट, ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू गो डाउन द स्ट्रेट, क्योंकि गाकपो का पता है। मेन गाकपो का मेन चीज ही वही है ना, कि कट्स डाउन एंड लाइक एग्जैक्टली. एम्स फॉर द फार फार कॉर्नर। या, इट वाज और सो पता है, हाँ, ऑब्वियस. ये चीज थी कि मार्टिनेज जब आया ना तो उसके चक्कर थोड़ा सा ब्लाइंड साइडेड होगा ही होगा कीपर आपका, हाँ. क्योंकि मार्टिनेज काफी अंदर आ गया था। हाँ. तो आई मीन दैट वाज, एंड पता है उससे पहले जो, वही वाली बात है ना, रॉबर्टसन ने जो पास दिया था, इट जस्ट टुक आउट टू प्लेयर्स ऑल टुगेदर। तो यू जस्ट हैड वरान टू, लाइक, टू स्कोर अगेंस्ट, हाँ, क्योंकि क्योंकि डालो हैड ऑलरेडी ओवर कमिटेड, वो तो कहाँ पे था आगे. एग्जैक्टली exactly, तो डालो जा चुका है, फ्रेड जा चुका है। तो हाँ. मिडफील्ड से आपके पास कोई वो नहीं आया, कैसेमीरो पीछे है नुनेज और साला के पास। तो आपके पास एक वरान से आपको बस टैकल, वरान से आपको लाइक वन ऑन वन खेलना है, उसके बाद मार्टिनेज आएगा, और मार्टिनेज आज उसका दिन नहीं था, सीधी बात है। नहीं था. तो वो ज्यादा आगे चला गया। तो भाई जो साला ने गिराया मार्टिनेज को, मतलब इट वाज सो गुड टू सी। और गैकपो ने कितना प्यारा तरीके से उसको गोल किया है भाई, लाइक as good as Salah's pass was, and I mean the turnovers was, उतना ही प्यारा गैक्पो का गोल था। इट वाज नॉट इजी, क्योंकि मतलब काफी, मतलब एज पे जाके उसके लग के आया वो चीज। हाँ. नुनेस के दो गोल, हेंडरसन का क्या अच्छा, मतलब उसका वो था जो फ्लिक था उसका। तो ऑल इन ऑल, फबीनो का कितना अच्छा गेम रीडिंग था जो उसने साला को दिया था। तो आई थिंक इट वाज अ, लाइक, आई थिंक इट वाज अ 10 on 10 गेम। it, आई it कैन it नॉट फाइंड is. फॉल्स इन वन। Yeah, it is going to be a game to remember. It's going to be a game you tell your kids about. I'm just happy to see Klopp smile. वो जो क्लॉप की स्माइल देखी ना मैंने, इट्स सो ब्यूटीफुल, बिकॉज ही इज वन ऑफ माय फेवरेट कोचेस एंड आई रियली लाइक क्लॉप, सो या. I want to, like, I want to have a one-on-one chat with him, and I want to say, I want to see you smile again. What Ten Hag told, this Rashford, I want to say it to Klopp, because I mean, जब वो बंदा मुस्कुराता है ना, पूरी टीम का मोराल काफी हाई हो जाता है। हाँ. Because तूने, व्हाट डिड यू थिंक अबाउट, लाइक, जस्ट अबाउट द मैन यूनाइटेड्स परफॉर्मेंस, लाइक उनकी तरफ से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तुझे क्या? as you said, they shut off their, like, they just switched off. या. और पता है, it doesn't help when you are claiming every foul या. if it's not a foul, because वही वाली अपन ने बचपन में सुनी थी, भेड़िया आया, भेड़िया आया। हाँ. ये चीज होती है फर्नांडिस के साथ। इट्स अ हाई टाइम ही शुड अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज ये चीज 2 साल पहले हो रही थी, जब सोलशायर था, वो बिहाइंड द डोज वाला जो सीजन था, हाँ. 2021, उसके अंदर ये चीज बहुत हुआ था, फर्नांडिस यूज्ड टू गेट पेनल्टीज लाइक एनीथिंग। बट ये सीजन से वैसे ही फीफा ऑफिशियल्स को बोल दिया गया है कि आप थोड़ा बहुत फिजिकलिटी अलाउ करोगे।
आप कहाँ आप फिर भी उम्मीद में चल जाते हो कि हाँ कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा ल्यूक शॉ वाज फ्रस्ट्रेटेड। जब आप फ्रस्ट्रेट होते हो यार, यू आर नॉट थिंकिंग स्ट्रेट। ल्यूक शॉ वाज फ्रस्ट्रेटेड। डालो एटलीस्ट फेस पे तो नहीं था फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग ही हैड अ रियली गुड गेम, बट वो चेहरे से या पूरी टीम को डाउन करते थे। कासिमिरो डिड नॉट हैव अ गुड गेम। And The whole talk was about Casemiro, Martinez. So there's this really like good a Liverpool fan called Ritvik Rajendran. Uh, the guy wrote, and there were all talks about Martinez, Darwin Nunes hasn't gone against Martinez and all that stuff. Like we saw what like he did. So like Martinez with all the good game reading that he had, like it was a shit show from him. Varane का मैं उतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, because I think the the errors that Martinez did, it kind of, just like he kind of outperformed negatively Varane. फ्रेड नॉन एग्जिस्टेंट था पूरे गेम के अंदर। आप फ्रेड का नाम ही नहीं सुने होगे कमेंटेटर से। ठीक है, फर्नांडिस का था, कासिमिरो का आ रहा था मिडफील्ड में। अगर आपका तीसरे बंदे का नाम नहीं सुन रहा, दैट इज प्रॉब्लमेटिक फॉर द टीम। रैशफोर्ड को आपने साइलेंट रखा। ट्रेंट आर्नल्ड को मैं दोबारा क्रेडिट दूंगा इस बात के लिए। ट्रेंट आर्नल्ड एंड कोनाटे। वेगहोस्ट क्यों था टीम में नहीं पता। तो इट वाज, तो रादर देन Man United playing poorly, I think it was the team selection which was very poor. And because of that, plus after we scored the second goal, वो जो होप स्टार्टर हुई ना, क्योंकि वेगोस तब तक नहीं हटाया था उसने। हाँ, एंटनी एंटनी का जो काम था वो था आइदर लाइक क्रॉसेस जा रहे थे या उसको डायरेक्ट शॉट ले रहा था वो। तो फर्स्ट जो उसने शॉट लिया था, एलिसन एक्सपेक्टेड दैट, बट उसके साथ क्या हो रहा है, ही इज जस्ट रिपीटिंग हिमसेल्फ। ही इज जस्ट ट्राइंग टू लाइक टेक द शॉट एट द फार कॉर्नर। आप नियर कॉर्नर कभी टारगेट नहीं कर रहे। आप कभी मतलब आप अपने गेम में अगर वेरिएशन नहीं ला रहे हो, तो ये चीज होगी एंड ही इज इजीली फ्रस्ट्रेटेड। वन ट्रिक पोनी है वो, एंथनी। वन ट्रिक पोनी। हाँ, उसके एक ही ट्रिक है, कट इन शूट, दैट्स इट। और वो सब अब आप वो रीड आराम से कर सकते हो। लाइक इट्स वेरी इजी एंड टू रीड। had a goalkeeper Fallison's caliber, easily readable है। ये इट्स वेरी इजी। So I think they missed the trick by choosing the wrong team, या or they could have gone for Sancho though। इवन द सब्स वर हॉरिबल। और मैं ये I पॉइंट I अभी don't under, I don't understand why Sabitzer is being introduced so late in the game। अगेन। या ठीक है, आप एरिक्सन को गेम स्टार्ट करवा रहे हो, बट यू आर नॉट लेटिंग सबित्सर प्ले या व्हेन यू नो सबित्सर कैन प्ले वेल। ठीक है, सबित्सर वाज द हार्ट ऑफ लाइप्जिग। आई थिंक ही यूज्ड टू प्ले फॉर लाइप्जिग, राइट? या लाइप्जिग लाइप्जिग के, एंड बायर्न म्यूनिख। हाँ, तो लाइप्जिग का मेन मैन था यार वो। हाँ, बायर्न में तो खेला ही कितना है वो। बहुत नहीं खेला वो। बट एग्जैक्टली, तो लाइप्जिग का मेन मैन था। आई थिंक ही वाज द कैप्टन इज वेल। तो हम्म। आप ऐसे प्लेयर को लेके आ रहे हो, देन यू आर नॉट स्टार्टिंग हिम। आप कासिमिरो को स्टार्ट करो, अंडरस्टैंडेबल है, बट यू कुड हैव गॉन विद सबित्सर एंड दिस क्या बोलते हैं, एक फ्रेड यार। सो एज आई सेड यार, टीम सिलेक्शन उनका उतना, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड। पता है, स्ट्राइकर में दे कुड हैव प्लेड एलांगा एज वेल। एलांगा इज अ राइट विंगर, बट आप मतलब यार कुछ तो कर सकते हो ना आप उसका। लाइक देयर इज नो पॉइंट इन प्लेइंग वुड वेगोस्ट। हाँ, क्योंकि आप मतलब बेशिकतास के अंदर आप बोल रहे थे कि लाइक ही यूज्ड टू बी अ प्रेसिंग मॉन्स्टर, बट भाई प्रेसिंग मॉन्स्टर नहीं दिखा वो। कुछ नहीं दिख मॉन्स्टर छोड़ो, प्रेसिंग ही नहीं दिखी मेरे को उसके तो रहा वो। मॉन्स्टर तो बाद में आएगा ना। बाउट वेगोस्ट है ना, वो रुक की तरह खेलता है। चेस का जो रुक होता है ना, उसकी तरह खेलता है हाँ वो हाँ, स्ट्रेट लाइंस में ही जाता है, यूं यूं। उसका वो रुक ही होता है ना। इट इज वेरी, तो ये चीज होती है विद विद गाय विद सच अ टॉल फ्रेम ना, ये चीज नेचुरल है। यू आर नॉट, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत मतलब इट इज टू हाई। हार्वी एलिट के लिए तभी तो इतना इजी है कर्टन जो करता है वो। हाँ, मतलब वो बंदा एक ब्राजीलियन की तरह खेलता है। तो उसको खेलते हुए देखना, वो ब्राजीलियंस के आगे ऐसे जाके कर रहा था ये चीज। हाँ।
तो वो चीज नेचुरल है हार्वी एलियट के लिए, वही चीज लाइक उसका वो चीज आती है कि उसके पासेस अच्छे होते हैं एंड ही कैन कैरी द बॉल फॉरवर्ड। तो But वो आई थिंक इट वाज लाइक वूट विगोस्ट एंड डिएगो डालो, थिंक these two were worst one of the performers today. worst, अगर वर्स्ट भी नहीं बोलूँ ना तो ये था, ये गलत थे, दे वर नॉट मेंट फॉर टुडे। Yeah. अगर क्योंकि अगर राइट विंग से थोड़ा सा भी अगर बेटर परफॉर्मेंसेस होते हैं ना, मार्टिनेज हुआ या वरान हुआ या कासिमिरो हुआ, फ्रेड हुआ, यार एज अ यूनिट गेम खेला जाता है ना। बट अगर आपने, अगर आपका दो चिंक इन द आर्मर, मेजर चिंक्स इन द आर्मर है, प्लस यूनाइटेड इज फिल्ड विद लाइक people who are easily frustrated, हाँ. so they are more prone to let go of their emotions हाँ. and the game as well. तो वो चीज हो रही है, तो you effectively you have four chinks in the armor, five including Luke Shaw. So Luke Shaw, Bruno Fernandes and Anthony, these three are setting firecrackers. और बाकी आपके डिएगो डालो और वूट वेगोस्ट अच्छा टीम सिलेक्शन नहीं है, तो इट वाज नेचुरल फॉर देम टू फॉल अपार्ट। और वो और एग्जैक्टली वही चीज हुई। हाँ, और बट मैं स्टार्टिंग टीम को हम लोग थोड़ा वो दे भी सकते हैं, कि मतलब थोड़ा ग्रीफ दे भी सकते हैं कि भाई यू वेंट 3-0 डाउन बिफोर एनी हाँ, सब्स हैपन. But हाँ, after, when you are making subs, Ten Hag is making the subs. Now, when you are making the subs, it's very important that you put on players that gives the existing players on the pitch belief कि नहीं हम लोग गेम जीतना चाहते हैं. वो हम्म, फ्रेड को निकाल के मैकटोमिनो को डाल रहा है, वो गेम उधर ही खत्म ये हो गई. तुम मैकटोमिनो को कहाँ डाल रहे हो यार? मतलब इट वाज लाइक लिवरपूल वर प्लेइंग विद कोच 12 men then, बिकॉज मैकटोमिनो तो हमेशा अपोजिशन के लिए खेलता है, तो वो अपनी टीम के लिए कहाँ खेलता यार मेरे को, मैं मैगवायर चाहता था इस टाइम पे। है? वो ला देते, क्या फर्क था? Maguire would be the happiest man in Man United this time, because it is the first battering that he is not a part of. So I think, नेक्स्ट सीजन से हो जाएगा, नेक्स्ट सीजन से हो जाएगा वो, आई थिंक यूनाइटेड विल लाइक लुक टू सेल हिम ऑफ दिस सीजन। yeah, but तो the subs were so poor from Ten Hag. मैं बता रहा हूँ ना सबित्सर, पता नहीं मतलब लाइप्ज़िग उसको छोड़ना चाहिए था नहीं छोड़ना चाहिए था, पता नहीं, बट it was a really good move of Ten Hag. As soon as Eriksen got injured, he got like Sabitzer, और Sabitzer, फिर yeah. Sabitzer को हमेशा एज अ सब यूज कर रहा है वो। I don't think he has even started till now. But that's the problem. You should And start Sabitzer. Sabitzer is a class apart from like Fred and McTominay. तुम कहाँ मैं यार? And मतलब ये also, वही वाली बात है। हाँ, हाँ, और like if, like this is what every rival fan was talking about. If Casemiro has a bad game, entire United team collapses. Casemiro had a bad game, तो पूरी हाँ, टीम ही कोलैप्स कर गई. लाइक कोई लीडर ही नहीं था पिच पे. देयर वाज नो लीडर, एंड ब्रूनो फर्नांडिस कैन नॉट बी अ कैप्टन. ही he इज is too emotional to be a captain. एग्जैक्टली. तुझे याद है आर्सेनल की गेम थी ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ, जिसमें हाँ, टोमियासु मेक्स अ मिस्टेक. वो बैक हाँ, पास एक देता है, और द अपोजिशन स्कोर, सॉरी, मैन सिटी के खिलाफ टोमियासु बैक पास देता है और केडीबी स्कोर्स हाँ, 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 उस बैक पास से. एंड यू सी व्हाट ओडेगार्ड डज एज द कैप्टन. ही गोज एंड ही डज दिस टू टोमियासु, कीप योर चिन अप, द गेम स्टिल ऑन. exactly. इसका तो खुद का शोल्डर यूं हो जाता है, रोने लगता है. ये इसका इसका गेम में अगर इसको एक फ्री किक अगर उसके साइड से नहीं मिलेगी ना, ये रोना चालू कर देगा। रोना चालू कर देता ही इज अ टॉडलर इन द गेम ऑफ मैन। है. या. मतलब जिस तरीके, मतलब हर चीज के लिए अगर आप रोगे तो नहीं आपका, भाई कोई भी रेफरी छोड़ो, अगर आपका मैनचेस्टर बॉर्न रेफरी भी आएगा ना, वो भी नहीं देगा तेरे को, बोलेगा थोड़ा तो मेरे को भी थोड़ा तो देख यार, थोड़ी तो शर्म खा। खुदा का खौफ कर, एक, ये क्या खेल रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? भाई मैं था आज, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दी, जिंदगी बदल दी। बट लाइक इफ We यू आर अ just मैन shot a यूनाइटेड फैन. podcast. We क्या क्या? just shot a podcast 12 hours ago, Yeah. and we were discussing. I was the only one among the four of us जिसने बोला था लिवरपूल will win, Win. but by 2-1। Yeah. And I said it would be 7-0 2-2. से, Yeah. 7-0। Nobody expected that यार। हाँ तुम कुछ बोल रहे थे भाई।
मैं ये कह रहा था कि इफ यू आर अ मैन यूनाइटेड फैन टुनाइट, डू यू वांट, how many of these players do you want to start again in your game, in your next match? Because if genuinely, if I am an Arsenal fan, and because I was an Arsenal fan during the 8-2, and I want every one of those sold. I did not want any of that player playing for my club because you cannot get battered 8-2. And 8-2. Yeah, Man United 2011. हाँ 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 You हाँ. cannot have your team get battered uh, by 7-0 and then expect to play the same players again next year. That cannot happen. Some The of these players problem have to be sold. problem is, who would you play against? Like, who would you play instead of Dallo? No, I'm saying next season, not this season. नेक्स्ट सीजन भी अगर मान लो ये क्रॉप तो रहती है. Uh, You cannot buy players for every position you want, right? unless you're Chelsea. Yeah, unless you're Chelsea. Then you can feel to like you. I think you can have Chelsea one versus Chelsea two, Yeah. and they'll still play a draw. So Man United, Diego Dallo cannot start for Man United this season. That's The problem pretty. is there is no one who can go forward because Van Bissaka cannot do that. They need So they you need someone. you have to play a 4-4-2 then because there is no one who can link with the right wing. Yeah, but like there are wing backs available in the market. There are so many wing backs that I they can go think for. I yeah they were connected with that Inter Milan guy ना जो Netherlands वाला है. हाँ, Dumfries. Dumfries, yeah. Yeah. So they were associated with him as well. अगर वो आता है तो that will be a good signing as well Yeah. So because so Dumfries is playing really well at Inter Milan. yeah. But so I think Dallo cannot start again for Man United next season. Luke Shaw has to be sold. Luke Shaw के बारे में बहुत बोला, oh he's world class, world class. He's not world class. He's not even लुक the शॉ top five left backs of this league. लुक शॉ का साल भर पहले या 2 साल पहले when he had really close cropped hair ना उस साल वो सीजन उसका अच्छा गया था ठीक है. And people are like Luke Shaw is the best English left back or best left back in the Premier League, everything ठीक है. His best season was Robertson's worst season Exactly. Exactly. in terms मतलब of in terms of simple statistics. I'm not saying हाँ. defensively or something like that. Simple statistics because they both play similarly. They both cross the ball well. आगे जाते हैं similar profile है right. तो उस सेम चीज तो आपका रिजल्ट बेटर होने चाहिए था अगर आपका बेस्ट सीजन चल रहा है. Robertson had the worst season that season. I think it was 2021. Luke Shaw had the best season, and Luke Shaw had same amount of like assists and goals as well. मतलब मैं किस बात का तुम्हारा बेस्ट सीजन है? मैं तो इवन इस सीजन की बात करता हूँ. इस सीजन रॉबर्टसन all you, मैंने बहुत लिवरपूल फैंस को सुना है that have been like, oh, Robertson has been very inconsistent, he's not reliable, and I agree that he has been very inconsistent. But at the same time, Robertson has given more better performances than Luke Shaw has. So if Liverpool fans think that Robertson is not good enough, Luke Shaw should not even start in the Man United team. He should not even be there. So I don't think Luke Shaw should be in that team. I don't think Fred should be यार in that team. Bruno should not be in that team. ब्रूनो तो देख यार कहीं नहीं जा रहा है ऑनेस्टली बिकॉज ब्रूनो इज वन ऑफ द मेजर लिंचपिन्स. यार बट दे कुड हैव स्टार्टेड टायरल मलासिया टुडे इंस्टेड ऑफ लुक शॉ. आई मीन यार पता है हो सकता है रिजल्ट देख के तो कोई भी कह सकता है कि यार मलासिया खिलाए थे कितना ही बुरा हो जाता है. बट मलासिया स्टार्टेड वेल. जब वो ये सीजन के स्टार्ट में आया था बुरा नहीं खेल रहा था. आई थिंक जो हमारा अवे गेम था यूनाइटेड के अगेंस्ट ओल्ड ट्रैफर्ड में उसमें थोड़ा बेटर खेला था मलासिया. Yeah. तो ही कुड हैव प्लेड. यार इलांगा को बिल्कुल नहीं खिला रहे ये लोग दोबारा. यू आर नॉट ट्राइंग. सैंचो इंजरी से आ गया है. ही हैज हैड गेम टाइम इज वेल तो ऐसा है कि यार वो फिर खेल सकता है. आप नहीं खिला रहे उसे. आप कब खिलाओगे? आप एंटनी को खिला रहे हो. नहीं, बट आई सैंचो ने अभी गोल किया था. सैंचो ने अभी गोल किया था पिछले मैच में. राशफोर्ड ने वो जो 3-0 जो विन थी
आई थिंक लेस्टर के अगेंस्ट 3-0 हुई थी शायद। आई एम फॉरगेटिंग, किसी के अगेंस्ट इस पे शायद राशफोर्ड ने 2 मारे थे, सैंचो ने 1 मारा था, ऐसा कुछ था। आप यार प्ले आप पता है आर्सेनल की ये वाली चीज बहुत अच्छी है, बट इट इज प्रॉब्लमेटिक एज वेल कि आर्सेनल ने ज्यादातर लाइक चॉप्स नहीं की अपनी टीम के अंदर। सेम टीम खिलाई है, इंजरीज आ जाती है इसके अंदर, तो ये एक बहुत कोर बड़ा फैक्टर रहता है। तो कोर यू ग्रुप रियली नीड सेम टू रहा बी है। अ, हाँ, तो यू नीड टू बी, नो, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर प्लेयर्स बेसिकली। दैट्स वेयर द मैनेजर कम्स इन। अब जस्ट टू रैप अप, मुझे तुझसे ये पूछना है, टॉप फोर ऑन नाउ फॉर इज लिवरपूल। इट इज इट इज आई मीन या इट इज, आई थिंक वी, विद द काइंड ऑफ गेम वी हैड, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आएगा। दूसरा चीज, हमारा गोल डिफरेंस जो था न्यूकासल के से, जो मतलब कंपैरिजन में जो गोल डिफरेंस, आई थिंक वी वर +13 दे वर +20। तो आई थिंक वो चीज मोर और लेस बराबर हो गई है शायद से। वी स्टिल हैव अ गेम इन हैंड अगेंस्ट टॉटनहम, या एंड एज यू क्लियरली नो, टॉटनहम कैन बॉटल देयर चांसेस। टॉटनहम आर आई नॉट। डोंट वांट देम टू, आई डोंट वांट देम टू बिकॉज आई वुड, वो सॉफ्ट स्पॉट है थोड़ा अंडरडॉग्स के लिए। सी दैट्स अ बिगर डिसरिस्पेक्ट देन आई कुड एवर गिव देम, दैट यू नो व्हाट, अरे जीत जा बेटा एक आध दो। Like, और that's ऑनेस्टली पता है, आई वुड माइंड देम विनिंग द Carabao Cup और द FA Cup, yeah just because I want Son and Harry Kane to win a couple of things. I mean, guys like United Ray are hilarious as well. Like, क्योंकि दूर है इसलिए hilarious है, पास होता तो बहुत insufferable होता है। क्योंकि हाँ this guy was saying Carabao Cup क्या ही होता है लास्ट ईयर, ठीक है, इस साल जीत रहे, he might have been celebrating like it's a Champions League win, also the quadruple is on. No, it is not, it was never on। यार 8-0 हो जाता, 8-0 हो जाता। I'm so sad not to see a 8-0 win against United. oh that would have been tasty, oh my god। anyway, और कुछ तेरे दिमाग पे है तुझे बोलना हो? खुशी। खुशी है। मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। मतलब ओके। honestly, I think this kind of performances was needed from these set of players, या because I think the core will be the same when we go to Madrid. And if we want to have हाँ, any outer chance to win against Madrid in Madrid, I think we need this kind of performance again. I think this performance will give your players belief that you can go to Madrid and score three. हाँ एग्जैक्टली। Yeah. So, 3 नहीं, 4 4, अवे गेम वाला सीन नहीं है ना इस बार। नहीं, वी नीड टू स्कोर हाँ, 4। just three. Oh और shit. पता है, ऑनेस्टली पॉसिबल है, पता है, आई मीन, क्योंकि यूनाइटेड वाज फ्लाइंग, और एज यू सेड, जो टैक्टिकल चेंजेस किए थे क्लॉप ने, अगर वो करता है एंड ही हैज फिट प्लेयर्स टिल द एंड, ही कैन डू इट। I think it is more likely that Liverpool finish above United in third place than it is बट likely। आई वुडंट गो टू फार इन दैट, नहीं नहीं, मैं मतलब ऑनेस्टली। कंपैरेटिवली कह रहा हूँ कि इट इज मोर लाइकली दैट लिवरपूल फिनिश अबव यूनाइटेड देन यूनाइटेड फिनिश अबव आर्सेनल। सो हाँ वो है। दैट आई थिंक, क्योंकि यू गाइस आर नाउ 7 पॉइंट्स ऑफ 6। 6 पॉइंट्स ऑफ देम, 6 और 7 पॉइंट्स ऑफ देम, मुझे पता नहीं अच्छा, एग्जैक्टली। क्या यूनाइटेड यूनाइटेड 7 पॉइंट्स? हाँ, 7 पॉइंट्स ऑफ यूनाइटेड। सो basically if they lose two more games and you go on a perfect run which you've done, तुम्हारी जो 2020 2021 सीजन थी, उसमें इन द लास्ट 10 गेम्स यू वेंट फॉर लाइक 9 विंस। या 8 to 9 विंस ऐसा कुछ था। या सो लाइक यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। एंड उसमें एक आर्सेनल की गेम है, इसलिए आई एम शिटिंग माई सेल्फ राइट नाउ। मैं ये सब सेलिब्रेट कर रहा था एंड देन आई डीप्ड इट, ओ शिट वी स्टिल हैव टू गो टू एनफील्ड। मतलब आई एम शिटिंग माई सेल्फ। Or I don't want any Arsenal fan to say that, oh, we are going to go there and beat Liverpool. Can't. That's Anfield. We've not won there in 10 years. It's not happening now. So Arsene Wenger was not joking when he said that Anfield is a fortress.
Yeah, and even like Mikel Arteta की बात करो तो the way he was planting those mics, he was giving respect that Anfield इतनी बड़ी जगह है कि you need to do something out of the box to prepare for that. You can't roll in like you are the Billy Big Bollocks and you can just beat Liverpool. Can't do that at Anfield. एग्जैक्टली। हाँ, Liverpool at एनफील्ड में तो पॉसिबल नहीं है। Liverpool at Anfield with Paul Konchesky and Craig Bellamy beat United when they were in their title-winning season. So that's how crucial Anfield is. अरे डिसाना ने गोल किए थे यार। उसमें डिसाना ने गोल किए थे। तो इसीलिए I respect to those Liverpool fans who said that worse Liverpool teams have beaten better United teams at Anfield. बहुत सारे ट्रू दैट। लिवरपूल फैंस से बोल रहे हैं. So like we okay, wrap up करते हैं. या Thanks so much, श्योर। Divyansh. I mean, the pleasure is all mine, and today the pleasure is all mine. So yeah, um, please like, please share, please subscribe, please support the channel. We are trying to grow. We are trying to make this a community sort of platform. So please do comment, do let us know your thoughts, and see you the next time. Up the Reds, up the Reds. Up the Reds.